अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड आई होप आपकी अब तक की जर्नी एक्सेल फॉर्मूलाज के हवाले से बहुत अच्छी चल रही है, जहां पर हम ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड कंडीशनल और इसके अलावा लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन को कवर कर चुके हैं। नाउ इज द टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेक्स्ट फंक्शन। तो अगर आप किसी ऐसे कॉलम या नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ काम कर रहे हैं जिनमें टेक्स्ट स्ट्रिंग्स पाई जाती हैं, there could be names of people, addresses, it could be in the form of email address or any other information about any dimension. It could be customer, product, branches, businesses, whatever. So text functions आपको इस तरह के columns के साथ transformation या addition of new columns add करने में बहुत help करता है. So we'll start with looking at some of the basic formatting function first, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कैपिटल या ऑल कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स हैं और आप उनको ऑल स्मॉल करना चाहते हैं, या ऑल स्मॉल में है वाइस वर्सा करना चाहते हैं, या इन दोनों कैटेगरीज में हैं और आप प्रॉपर करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटलाइज एंड द रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स नॉर्मल स्मॉल लेटर्स में रखना चाहते हैं, और इसके अलावा आप एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, उनको कंबाइन करके उन टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को एक टेक्स्ट स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं विद और विदाउट सेपरेटर. So this video is going to be all about that. Let's take a look. So now we will move to our Excel again into this text worksheet. और यहाँ पे हमने बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें सबसे पहला काम तो ये है कि हमने प्रॉपर फर्स्ट नेम निकालना है. फर्स्ट नेम यहाँ पे आ रहा है एंड यू कैन सी कि ये सब के सब कैपिटल लेटर्स में हैं, तो मुझे इनको प्रॉपर लेटर में चाहिए. Simple. I'll use proper, refer to this text, close, and I get it. Right? But then, अगर मैं इसमें यहाँ पे क्लिक करके देखूं, तो मुझे नजर आ रहा है कि ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लीडिंग स्पेस आ रही है. ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेस आ रही है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. कहीं ना कहीं स्पेसेस के इश्यूज हैं, हर जगह नहीं, कहीं ना कहीं है. और यहाँ पे अगर इशू था और यहाँ पे भी अगर इशू था, तो वो मुझे देखने में पता ही नहीं चल रहा. आई कांट सी इट. तो टू बी ऑन द सेफ साइड व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट यूज ट्रिम. अच्छा, लेट्स से मैंने ये प्रॉपर किया, मैं थोड़ी देर के लिए जस्ट टू शो यू, मैं कंट्रोल सी एंड इसको मैंने पेस्ट स्पेशल कर दी ताकि अभी फॉर्मूला ना दिखे या एक्चुअल मुझे नाम दिखे. तो यू सी ये स्पेस अभी भी यहाँ मौजूद है. एंड दिस कैन लीड मी इनटू प्रॉब्लम कि अगर लेट्स से मेरे पास एक सेपरेट कोई वर्कशीट है जिसमें ये नाम आ रहा है, जिसमें ये नाम आ रहा है विदाउट स्पेस, और अब मैं जो है कोई वी लुकअप परफॉर्म करना चाह रहा हूँ. वी लुकअप दिस रेंज, फाइंड दिस रेंज एंड गिव मी. सो नाउ आई हैव द एरर बिकॉज क्योंकि वहां की जो जेनिफर है उसमें स्पेस है और यहाँ पे जेनिफर में स्पेस नहीं है, तो ये लुकअप नहीं कर रहा. ये एक्सेल इसको 2 अलग अलग वैल्यूज देख रहा है. तो व्हाट आई कैन डू इज इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग प्रॉपर आई विल यूज ट्रिम, and within trim I will use proper. So proper close, trim close, get the answer, and now when I look into this it gives me the answer. Trim ने क्या किया? Trim ने वो जो issue था leading spaces का उसको overcome कर दिया. And I can check this now. I can come back here, I can copy this whole range. In fact, just copy this one and paste this, and when I check F2 you see the space is gone. जबकि यहाँ पे स्पेस है, एंड दिस इज व्हाट ट्रिम फंक्शन हैज डन फॉर मी. तो ट्रिम फंक्शन आमतौर पे इट्स वेरी हैंडी टूल टू यूज, खास तौर पे अगर आप वैसे आप भले ना करें, आप नॉर्मल चल रहे हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, शुड बी गुड, बट अगर आपको कोई एरर आ रहा है, आप टेक्स्ट स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं एंड यू आर नॉट श्योर कि क्या मसला है, ऑलवेज थिंक अबाउट दिस ट्रिम फंक्शन बिकॉज दैट कुड बी अ जेन्युइन प्रॉब्लम. सेम गोज हियर. मुझे अब लास्ट नेम जो यहाँ पे आ रहा है कैपिटल में, अच्छा अगर ये लेट से प्रॉपर में होता और उसको मुझे ऑल कैपिटल करना है, ये जेनिफर जैसे आ रहा है प्रॉपर में, अगर मैं लोअर करूंगा जस्ट टू गिव यू अ डेमो, तो इसने जेनिफर इंटायरली को स्मॉल लेटर्स में कर दिया, इवन जे को भी. अगर मैं इसको अपर करूंगा तो उसने सबको कैपिटल लेटर्स में कर दिया रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग. बट मैंने चूंकि प्रॉपर लेना है तो मैं प्रॉपर को यूज करूंगा. सो अगेन ट्रिम, प्रॉपर, एंड दिस टाइम अराउंड मैक्रा, क्लोज, गॉट इट. आई गॉट द आंसर हियर आई थिंक. देन मुझे फुल नेम देना है. अब फुल नेम देने के लिए मैं क्या करूंगा? Now I have the first name, I also have a middle name, I also have a last name. तो मैं concatenate का फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ और मैं
ampersand भी use कर सकता हूँ. So first with concatenate. First text will be this name. The second text need to be a space because मैं एक space भी देना चाहता हूँ. तो मैं inverted commas के बीच में एक space दूंगा. Inverted commas के बीच में एक space दी. Then comma again. The second is the initial name, the middle initial. Then again मुझे space देनी है. Inverted commas, space, inverted commas. Again select this one, and now I will select proper last name, and there you go. Full name यहाँ पे आ गया. Very easy, right? अच्छा, इसमें एक important बात कि अगर मैं concatenate के अलावा मैं concatenate से नहीं हासिल करना चाह रहा, बल्कि मैं ampersand यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? I'll select this ampersand space, again ampersand, middle name, again ampersand and space, and then ampersand. There you go. It can still be achieved. So concatenate or ampersand, you have two ways to combine text strings and works perfectly fine. Hey, thanks for watching. I hope you liked it. Please do not forget to subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon so you receive regular updates. If you'd like to hear about any specific topic from us, do let us know in the comments so we'll accommodate that. See you soon.